नोटिस बोर्ड मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम यहाँ डॉक्टर पंखुड़ी कमल के साथ हैं। शी इज़ ए community health officer at a wellness center, I believe, in Jalandhar. And she is going to talk to us about the vaccination drive, the location of the vaccination camps. And as we all know that corona is pretty much negligible at this moment. कल भी हमारे सिर्फ 7 एक्टिव केसेस थे, 0 डेथ, 0 न्यू केसेस. So a lot of people are asking questions कि ये कोरोना की ख़त्म हो गया कि हैगा हाले? Are we still allowed to roam around like we used to, or we still need to take precautions? So go ahead and take it away and let everybody else know what's going on, and from the medical point of view, share that with our... Good evening everyone. I'm Dr. Pankhuri Kamal, and as he just asked me if corona is gone, corona चला गया है क्या? फ़िलहाल के लिए तो yes, गया तो नहीं है, इस पे कमेंट करना it's too early, and we can also say कि it is not very late also, but yes, अभी के लिए बहुत relieved है because the active cases are very less, negligible, and the new cases are also like yesterday they were 0, and today's cases are yet to come, so let's see. एज़ फार एज़ यू नो कि कितने हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, येस प्रिकॉशंस तो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे लेते रहना चाहिए. जैसे प्रिकॉशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का है, ऑल्दो नोबडी इज़ वेयरिंग मास्क, बट येस when you are in a crowded place you must wear. It is a very good it is a very good habit, and I think we all should keep doing this, because you never know, there is a probability that a new strain is going to come back, so just don't leave it ऐसे ही छोड़ मत दो. मास्क पहनना, keep wearing it. अभी अगर हम कोविड प्रिवेंशन या कोविड कंट्रोल की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है. वी आर ऑल लाइक इस चीज़ के लिए इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द पब्लिक ऑल्सो, बिकॉज जो कोविड वैक्सीनेशन है उसको बढ़ चढ़ के सब लोगों ने एक्सेप्टेंस दी है, और इसीलिए हम बहुत अच्छी वैक्सीनेशन कवरेज कर पाए हैं. और आज की डेट में जो अगर हम एडल्ट वैक्सीनेशन की बात करें, जो 18 प्लस है, जिसको अब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हो गया चलते हुए, उसको तो अभी सेकेंड डोजेस तक जो है ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है. हाँ, कई लोग हैं ऐसे जो अभी भी जिनकी सेकेंड डोजेस जो हैं वो ड्यू हैं, तो उनसे यही अपील हम करते हैं कि प्लीज़ आगे आके अपनी सेकेंड डोज कंप्लीट करवाओ. और वो लोग जिनकी कि अभी जो प्रिकॉशन डोज़ है, प्रिकॉशन डोजेज़ जिसको नॉर्मल लोग बूस्टर डोज़ कह देते हैं, विच इज़ नॉट अ बूस्टर डोज, इट इज़ अ प्रिकॉशन डोज, वो अभी है 60 प्लस जो पॉपुलेशन है जिनको कि दूसरी डोज़ लगे हुए 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं. और उन लोगों को वैसे मैसेज भी आ जाता है, पर अगर आपको मैसेज नहीं भी आया है तो भी अगर आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं दूसरी डोज़ को, तो अपना नियरेस्ट गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पे जाके अपनी प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगवाएं. इसके अलावा जैसे ये तो हम कोविशील्ड और कोवैक्सिन एडल्ट डोज की बात करते हैं, इसके अलावा जो 15 to 18 प्लस कोवैक्सिन है वो ड्राइव भी हमारी बहुत सक्सेसफुल चली है, और स्कूल्स में जाके हमने वो सारा कवर किया है. इसी के साथ साथ जो 12 प्लस जो अभी कॉर्बीवैक्स चली है, 12 to 14 ईयर्स का जो स्लॉट है, उसमें भी कॉर्बीवैक्स की भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है दैट हैज़ बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, एंड हैट्स ऑफ टू द चिल्ड्रन that they have taken it up in a very good way. So I must congratulate all the parents and children as well. Like we all know, the Disaster Management Act through the central government and the state government has been abolished from the last few weeks. It is no longer in effect, so none of the guidelines apply anymore. Social distancing, nobody can enforce. Mask, nobody can enforce. So what kind of message you want to still give out, that even though those guidelines have been lifted by the government, are we still in that phase that we should still take precautions and try to get past this pandemic and get back to normal lives? See, I think if we have not learned anything from our experiences
तो फिर तो कुछ भी नहीं है. मतलब अगर हमने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ नहीं सीखा है, हमने कुछ भी नहीं किया है ज़िंदगी में. हमारे को कोई गाइडलाइंस इम्पोज करता है, हमारी प्रॉब्लम है, ये हर फील्ड में है कि हम तभी कोई चीज़ फॉलो करते हैं. बट बात ये है कि हमने सब लोगों ने कोविड खुद सहा है, इससे हम खुद निकले हैं. सो येस, एज अ प्रिकॉशन यही एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में तो देखो नहीं जाना चाहिए. अभी भी सोशल डिस्टेंसेस का पालन करना ही चाहिए. और अगर आप बहुत क्राउडेड प्लेस पे हो, स्पेशली अगर आप किसी क्लोज्ड कमरे में हो, तो येस डू. एंड पब्लिक इज़ देयर. Public, especially if you are like out of your family and you're sitting with a public, you're doing a public dealing, yeah, definitely mask is required. Or if not a mask, and because nobody is doing it, if you feel that mask is not required, so at least have a safe distance. This is what I'll say. जैसा कि कई लोगों की आप कमेंट्स भी पढ़ते होंगे सोशल मीडिया पे, और आपसे पर्सनली भी बात करते होंगे लोग जो स्केप्टिकल हैं कि कोरोना है ही नहीं है. कोरोना वाज नेवर हियर, इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड थिंग बाय द ग्लोबल गवर्नमेंट टू टेक ओवर वन वर्ल्ड वन ऑर्डर. ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत बाहर निकल रही हैं. आपने वैक्सीनेशन कैंप्स में भी काम किया है. यू हैव वर्कड विद कोरोना पेशेंट्स in person, you have seen them. We ourselves have lost quite a few people in our families to this disease. My mother even contracted corona right maybe 2 months before she passed away. My father had it. My sister's entire family had it. Okay. So we have seen people with the symptoms and the uncomfortable and uneasiness they go through. But people who haven't experienced it say this is nothing. This is just a flu. What would you like to tell them as a doctor? See, I would. You were lucky that none of your very near ones and didn't have that. But the thing is that if you are lucky, doesn't mean that one thing doesn't exist at all. See, this approach is not new. कि हमें नहीं हुआ तो है ही नहीं ये चीज़. इट कैन नॉट बी. इतने लोगों को गलत फहमी नहीं हो सकती है. कोरोना इज़ देयर, हम उसको एक्सेप्ट करें चाहे उसको एक्सेप्ट ना करें. वी हैव सीन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट. देयर हैज़ लाइक फैमिलीज़ जो हैं इससे इफ़ेक्ट होके कई तो फैमिलीज़ ख़त्म हो गई हैं, जैसे आपने बताया. Stationery shop right by our house. Yes. Neil ji know about it. All in one, right? Something like that. Even I know. The entire family got wiped away. There's only youngsters left. I think brother and sister, if I'm not mistaken. I go to that store religiously every week just to buy something. You know what I mean? I don't need it. I just go there. I buy a pen, I buy something just to support him. So that is a prime example of the whole family getting wiped out. Brothers, mothers, fathers. Mother is there. The mother's still there? Okay. So, but still, from whatever. Grandmother died. Yeah. His father and his uncle. Died. Yes. See, this is, there are so many families like this. Yes. Even so many of our friends, colleagues, they lost their lives, they lost their life partners like that. And वही वाली बात है. I remember the time when I used to go to civil hospital every morning. I used to जाते ही हम लोग को डेड बॉडीज़ दिखती थी और सच्ची में बहुत खौफ हो जाता था कि पता नहीं हमारा नंबर कब आ जाना है. I received a call from my cousin sister about 8-9 months ago that my aunt, जो मेरी मासी है, she is in a hospital and she has corona. And she passed away while she was in the hospital. Nobody was allowed to go see her. Nobody was allowed to go to her funeral. She was wrapped in a body bag. Only 3 people from the family, not even 4. 4 कंधे चक्कर वाले 4 मोटे चाहिए होंगे, 4 भी नहीं सके होते. सर हमें तो स्टार्टिंग में हमने क्रीमेशंस भी जाके सुपरवाइज किए हैं. कोविड जो क्रीमेशंस होती थी वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर होती थी. तो आई हैव सुपरवाइज दोज क्रीमेशंस एज वेल एंड आई हैव सीन फैमिलीज जस्ट टू हैव अ लुक ऑफ द पेशेंट, बट दैट वाज नॉट अलाउड बिकॉज वी वर नॉट, as a supervisor, we used to not allow them to uncover the
बॉडी. सो द थिंग इज़ कि वो टाइम भी देखा है, उसमें से हम थैंकफुली निकल आए हैं विद ऑल आर एफर्ट्स एंड बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ. तो जस्ट डोंट फॉरगेट दैट, जस्ट डोंट गेट अवे लाइक कि हो जाएगा, ऐसे नहीं है, इट कैन कम बैक. बट येस एट द सेम टाइम डर में भी नहीं रहने की ज़रूरत है. एंड येस मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो थ्रू आउट भी देखा है कि दोज हु हैव you know like fought with it very like with a strong will have definitely been they have a better prognosis. So yes, अभी भी वही हमें चाहिए कि अगर दोबारा भी आता है तो हमारी विल पावर्स अच्छी होनी चाहिए. It's still the message that still keep adopting a good healthy lifestyle, and a healthy lifestyle means good exercise, good diet, and also following all the at least, or not all but at least जो बहुत ज़रूरी कोविड जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको फॉलो करना अभी भी चाहिए हमें. Not just because of corona, we should be following this in general. You know, yes, there's a lot yes. of other diseases in this world. Definitely. Corona is not the only one. Yes. We should keep, I think, personal hygiene, washing of your hands, keeping social distance. In general, yes, you're absolutely right. See, we have a very good example of tuberculosis. Yes. So the majority of the population who is tuberculosis effective, most of them they are very mutant cases. Those who even don't know that they have tuberculosis, but they can spread because it is an airborne disease. Yes. Again, you could be in the same room and catch it. Yes, you can definitely be, because as I just said that few of them they don't have any symptoms at all. Yeah. It's dormant. Yes, they and they can stay like that for their life. But yes, by following a certain kind of a lifestyle, yes, you can definitely prevent these diseases by a large number. So yes, it is required. In the history of pandemics, you know, it's been recorded in recent history. If we go a century back, we had the Spanish flu in the early 1900s, which lasted 4 years. The biggest casualties were in India. You know, if you look at the numbers, a lot of people died in India as compared to other countries. Fortunately, we are scientifically so advanced at this moment that we rapidly got the vaccination out within a year. And within a year and a half, we got almost 80-90% of the population vaccinated. So I don't think we'll go through the full 4 or 5 years of it, but still, this disease, I think, is going to stick around, minor percentage of it. So we should still take precautions. That's the message. Yes, exactly. The crux is that corona is not going to vanish. It is going to be there, this way, that way, small, big. But then we should not forget it. And if we are still not accepting it, that if there was any corona any time, this is just our negligence, our ignorance. We must accept it. And yes, as you said, that it is going to stay. So keep following the small steps and small precautions. ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ. ਇਹੀ ਹੁਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਕਦੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਭੀੜ 'ਚ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਲੋ ਮਿਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਝਿਜਕਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ. ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ. ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ. ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਈਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ. ਪਰ ਹਾਂ,
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ, ਇਹ ਨਾਮ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਓਮੀਕਰੋਨ, ਡੈਲਟਾ, ਕੋਵਿਡ, ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾ what is your name? So it's just to light yes ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਓਮੀਕਰੋਨ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਟਸ ਡੈਲਟਾ ਯਾ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। exactly, these are variants basically and they must be having ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ composition no but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ composition ਹੈ ਉਹਦੇ accordingly definitely they must be naming those strains, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। You have came here out of your own accord, you know, and so far to sit down with us and share your expertise, opinions with our audience and members, and I appreciate it and I thank you so much. Thank you so much. Thank you. Keep on trucking and keep on serving the community as you have. Thank you. ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੜਾ ਹੈ, ਮਕਸੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇੜਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ESI ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ESI ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।